है तू मेरे गाने का फर्स्ट कीवर्ड है। वैसे है तू का मतलब है जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो उसे बताते हैं कि हाँ आप कितना प्यार करते हैं, तो उसे बताना कि हाँ सिर्फ तू है तू, सिर्फ तू, ये इसका मतलब। बहुत सारे चैलेंजेस क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मेहनत है। पहले किसी गाने को रिकॉर्ड करना, अच्छा रिकॉर्ड करना, लोगों को पसंद आए, उसके बाद उसे वीडियो शूट करना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो जिसे हमें टाइम लगा करने में। वैसे जनरली हमें एक गाना रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो करीब 3 महीने के बाद ये हमने पूरी एल्बम तैयार की है तू। जी, जी म्यूज़िक कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया। एज अ न्यू कमर कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लगा मुझे कि हाँ क्यों, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे किसी तरह की। जी, इसका प्रमोशन हाँ जी म्यूज़िक और दाऊजी फिल्म्स मिलके यूट्यूब पे करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे जी ETC है और जिंग है जो जी के चैनल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एसोसिएट चैनल्स हैं जिन पे इसका प्रसारण होगा। ये माइलस्टोन है मेरे करियर का, क्योंकि प्रोफेशनली पहला एल्बम है और पहली चीज़ हमेशा सबको याद रहती है। अगर मैं अच्छा करूँगा तो सब लोगों को याद रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन थी लता जी की, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। तो मैं चाहता हूँ कि याद रहे। लाइन से बाद आप 2 लाइन भी आप मेरे गाने की लाइंस मैं आपको सुना दूंगा। है तू आज भी इन फिजाओं में, है तू महफिल की इन शामों में, है तू मेरे अल्फाजों में, मेरी यादों में, मेरी साजों में, मेरी जिंदगी मेरी राहों में। हे कह देना दूरियां क्यों अपनी सी लगी। दिस इज द सॉन्ग। थैंक यू सर। थैंक यू। See, I'm an artist, and if there is something about melody and people are singing, and Ankit is a very good singer, so I've just come to support him and applaud him in his venture. उस एल्बम के गाने आपने सुने तो कैसा लगा आपको एज एन इंडिविजुअल? See, it's a soulful. It's very melodious. It's I think the primary emotion what he's talking is about love in separation or love in union, and I think Ankit is very उनके समझ गाने की अच्छी मुझे लग रही है। सो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक टू हिम। एज अ म्यूजिक लवर आपको किस तरह का म्यूजिक पसंद है? I love mushy songs, and I listen to more of Selena Gomez, Miley Cyrus, and international is like Selena is one of my favorites. और प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है आपके? I am undergoing training for a project, and let's hope the announcement should be soon. Thank you. बोलो ना, कौन आना कर रहा है? So what is you are going to contribute to the event in what way as a friend or? Yeah, actually Ankit came to my studio 3 months back and he said he's launching his album and that I should design for him.
So today Ankit is wearing a lovely jacket from my Earth 21 collection. So I wish him all the best, and it's great that even new upcoming singers are supporting our cause of global warming and eco art fashion. Talking about the music part and the lyrics, how did you find it? Is soluble or not? I mean, Yeah, it's very nice because it's very simple, so a normal man can connect with it, and I love the video. It's very, very natural, nothing over the top. So it's very easy for the young generation to connect with something like that. So I wish him all the best. and as a music lover, what kind of music do you prefer to listen? I prefer anything which touches my soul, anything which is melodious, nothing very loud. Something which is more subtle and soft is something that I prefer. And what's happening in your professional life? Are you launching any new brand of Well, right now I'm gearing up for Pune Fashion Week, where I am showcasing my Celebrating Oneness collection. And to showcase that, I have Manisha Koirala who's going to walk the ramp for me. So at the moment, we are busy with that. In what way you have to come here to contribute to the event as a friend, as a professional? As a friend, as a corporate professional, as someone who is a music enthusiast myself personally, I love singing purely as a passion and hobby, and yes, I'm there for the support of music, for the support of a lovely friend here personally. You are listening to the music as well, you are seeing the video as well. So what about the video part and what about the music part as well? The music is incredible for someone who does not come from a very professional music background. To deliver the kind of depth that we've just seen today is incredible. I wish Ankit a phenomenal success. He's pursued a passion, he's pursued a hobby, and he's delivered the kind of music which I can call thoroughly professional, thoroughly enjoying, incredibly entertaining, and the best part about it is that it's contemporary. And as a music lover, what kind of music do you prefer to listen? Contemporary, anything that, see, music actually genuinely has no boundaries. You can't really classify if you're a passionate music lover, what's the kind of music you love, what's the kind of music you want. Anything that connects, anything that sounds melodious. Melody has no language actually. So anything that strikes a chord with you, that sounds melodious, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हर अच्छी धुन की एक खनक होती है, तो बस वो अगर खनक है तो that's good music. And as a professional, what is going on in your professional life as well? From professional life as well? I am producing a show, a journal entertainment show on a leading journal entertainment channel. I'm producing another fiction show on another GEC. I'm producing and working on a remake of a Hindi movie, which is a super hit romantic comedy sequel of the 80s, one of my top 5 favorites. So a lot of action happening.